So what are the steps we will follow? And following these steps will give you 16 to 20 marks in your end semester exam. So please write down this one. A knuckle joint is to withstand a tensile load of 25 kilonewton. Design the joint if permissible stresses. Again, mark this, underline this word. Underline this word. I will tell you what does it mean. If permissible stresses are in tensile, it is 56 MPa. In shear, it is 40 MPa, and in crushing, it is 70 MPa. Okay, so now can someone tell me what is the first step? Okay, now I am not asking about design of knuckle joint. I am asking about basic design procedure in machine design. So what is the first step in machine design? Steps in machine design. So What? the need of the Yes, machine. very good. The first step is what is the need of that particular product. अगर need होगी तो ही हमको डिजाइन करना है. तो नीड ऑलरेडी हमने देख चुके हैं. देर आर मेनी एप्लीकेशन ऑफ नकल जॉइंट. सो नीड इज देयर. व्हाट इज नेक्स्ट सेकंड स्टेप? Load applied. Which load Yes, applied? what are the different kinds of load applied? So here it is given that there is a tensile load is to be applied, which is of 25 kilonewton. Okay, so what is third step? mechanism analysis. Yes, what is the mechanism? तो अभी आपको पता है कि अगर नकल जॉइंट है तो मैकेनिज्म क्या है? इट्स अ सिंपल मैकेनिज्म वेर इन टू पार्ट्स दैट इज सिंगल आई एंड डबल आई विल बी जॉइंट टुगेदर बाय मीन्स ऑफ अ pin. This is the mechanism. Just there are two different parts, single eye and double eye, and it will be joined by a third part that is a pin. And to support that pin, there is a column. This is the third step. What is the fourth step? Selection of material. Yes, very good. The fourth step is selection of material. Now you have to select the material from the standard design data book, that is PSG. But this step is not valid in this particular problem. Why it is not valid? Because they have already given us the material strength. मतलब जो हमारा डेटा है उसमें ऑलरेडी हमको हमारा जो मटेरियल सिलेक्टेड है पहले से उन्होंने जो सिलेक्ट किया है वो हमको ऑलरेडी वैल्यूज दे दिया. दैट टेंसाइल स्ट्रेस फॉर दैट मटेरियल इज 56 MPa, shear stress is 40 MPa and crushing is 70 MPa. ये हमको उन्होंने डेटा में दे दिया. अगर ये वैल्यूज हमको दिया हुआ है दैट मीन्स हमको मटेरियल सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मटेरियल सिलेक्टेड है. ओके, नेक्स्ट स्टेप. Design of element. डिजाइन ऑफ एलिमेंट्स. ओके, नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद अवर डिजाइन प्रोसीजर. मैं जो बोल रहा था द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज दिस वन, permissible stress. Permissible stress means this values which are given to you 56, 40 and 70 are the permissible values. These are not the ultimate values or these are not the maximum values. अगर सपोज ये वर्ड नहीं होता, ये परमिसिबल स्ट्रेस नहीं होता, खाली ऐसा दिया होता डिजाइन द जॉइंट इफ स्ट्रेसेस आर, सिर्फ इतना दिया होता, ये वर्ड नहीं होता परमिसिबल, देन फैक्टर ऑफ सेफ्टी विल कम इनटू प्ले. बिकॉज द थिंग विच इज गिवन और द स्ट्रेस विच इज गिवन इज द मैक्सिमम स्ट्रेस द कंपोनेंट कैन विथस्टैंड और दैट मटेरियल कैन विथस्टैंड. बट हम उसके भरोसे पे नहीं रह सकते. जैसे हमने देखा, बिकॉज वी आर नॉट कंसिडरिंग द एक्चुअल थिंग्स, वी आर नॉट सर्टन अबाउट लोडिंग्स. अब ये बोल रहा है 25 किलो न्यूटन, हो सकता है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे 26 हो गया बिकॉज ऑफ सम अननोन फैक्टर्स. तो अगर हम लोग मैक्सिमम पकड़ के चलेंगे तो डिजाइन हमारा फेल हो जाएगा. आवर डिजाइन विल नॉट बी एडजस्टिंग टू द फ्लक्चुएशंस ऑफ बेसिक लोड्स. तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी डालना पड़ता है. बट यहाँ पर हमको क्या दिया है, इट इज परमिसिबल स्ट्रेस. परमिसिबल स्ट्रेस मीन्स यू डोंट हैव टू डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ऑलरेडी डिवाइड करके उन्होंने दिया कि दिस आर द परमिसिबल वंस. तो इसलिए मैं बोल रहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट और फर्स्ट स्टेप है. अगर फर्स्ट स्टेप में परमिसिबल दे दिया है मीन्स यू डोंट हैव टू डिवाइड विद फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और अगर परमिसिबल वर्ड नहीं दिया है देन यू हैव टू डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी टू फाइंड आउट परमिसिबल स्ट्रेस. तो अगर ये फर्स्ट स्टेप आपने रॉन्ग कर दिया तो आगे आपका पूरा डिजाइन प्रोसीजर रॉन्ग हो जाएगा. एनी डाउट्स टू एनीवन? So now we will start. Okay, my solution will start now. Solution. Okay. So solution. My first element to be designed is rod. और rod में क्या आता है हमको मालूम है, क्या आता है जल्दी बोलो. rod में कौन सा फेलियर आएगा? Tensile failure. Yes. So first case is tensile failure. So I will write tensile failure. Then I will write formula.
sigma t is equal to P divided by area we have seen. For rod it will be pi by 4 d square. Okay, so I have written the formula now. I will substitute. तो वैल्यूज में क्या आ जाएगा? सिग्मा टी टेंसाइल स्ट्रेस कितना दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में? यस, सिग्मा टी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 56. 56 Yes, megapascal. 56. So I will just substitute 56 in place of sigma t. तो यहाँ आ गया 56 is equal to P is load. कितना लोड अप्लाई हुआ है? 25 kilonewton. 25 किलो न्यूटन. Please make the note of units. It is 25 किलो न्यूटन. तो यहाँ क्या आ जाएगा? 25 into 10 raised to 3 in newtons divided by pi by 4 d square. So what is unknown here now? Diameter. Diameter of the rod. So now you please calculate and give me the answer what you are getting for diameter of rod for this particular case. Or when we will design, we will also show the failure diagram. यहाँ पर मैं टेंसाइल ऑफ रॉड का फेलियर डायग्राम बना दूंगा. दिस इज माय फेलियर डायग्राम where the rod diameter is 23.84. Okay, so what you are getting? So after solving, you are getting 23.84. 23.84 mm. Correct? Yes, sir. Okay, this is also the answer which I have. So now you can approximate here that D is, now again it is up to you. You can go 25, you can go 28, you can go 30. So to be on the safe side, just to be on the safe side, I am rounding off it to 30 mm. So all of you make D as 30 mm, just to be safe at the later stage of the problem. सर ज्यादा ही लेने का ना, कम नहीं ले सकते ना? कम कैसे ले सकते Distance कम हो जाएगा. देखो, अच्छा, बहुत कम हो अच्छा, जाएगा. बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा इसने. कम क्यों नहीं ले सकते? अब देखो इसका रीजन सुनो. D is 23.84. दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट. अब ये समझ लो, दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट टू सस्टेन अ लोड और स्ट्रेस ऑफ 56 न्यूटन पर एम स्क्वायर. इससे कम होगा तो फेल हो ही गया, इससे कम चाहिए ही नहीं. दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट. अगेन आई रिपीट, द आंसर विच वी गेट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द डायमीटर और एनीथिंग, एनी पैरामीटर्स. सो इफ दिस इज मिनिमम 23.84, कम से कम होना चाहिए. इससे नीचे का तो डिजाइन फेल्ड है. दिस इज द मिनिमम, तो हमको हमेशा उसके ऊपर ही जाना. सो इट विल बी 25, 28, 30, एनीथिंग यू कैन टेक. Now, what is our second component? First component हमारा डिजाइन हो गया, D is equal to 30. What is second component? As per the procedure, second component we will take it as pin. और पिन में भी सबसे पहले हम क्या लेंगे? shear ले लेंगे. ठीक है, मैंने अभी आपको प्रोसीजर बताया. पिन में shear. Now I will add formula. Sigma S is equal to P divided by 2 into pi by 4 into D1 square, because I have taken diameter of pin as D1. And how it is this formula comes, we have already discussed. Now sigma S, shear का वैल्यू क्या दिया है हमको? 40. So I will substitute here 40 is equal to, load is same, that is 25 into 10 raised to 3 divided by 2 into pi by 4 into D1 square. Now what is unknown here? Unknown is D1. Now some of you please calculate this and give me the answer. What is D1? 20. 20. Exact 20 you are getting? 19.94. Okay, no problem. Okay, 19.94 is the answer which you are getting by calculation. What does it mean? This is the minimum requirement of diameter of pin. So what I will do for approximation, I can go up to 25, let us say. So I will write down D1 is equal to 25 mm. This is my diameter for pin. Okay. So after pin, let us go for the second failure in the pin, which is crushing in single eye, or crushing not in single eye, crushing due to single eye. So what will be formula? Sigma C is equal to P divided by D1 multiplied by T. This also we have seen while explanation. So area will be D1 into T. Sigma C is given to me as 70. It is 70 is equal to 25 into 10 raised to 3 divided by it will be how much?
D1 we have already got value of 25 multiplied by T. Now the only unknown in this particular equation is T. So T you can write down N. Now similarly, okay, I will go for parallelly. So crushing, the third is crushing due to double I. Again, everything same. I have already given you shortcut. For single I and double I, the only thing changes is it comes to be twice and T changes to T1. So on the similar lines, what I will do, I will write here sigma C is equal to P divided by 2 into D1 into T1. This is shortcut. But how this comes, I have already explained it. So P divided by 2 into D1 into T1. So sigma C is 70 is equal to 25 into 10 raised to 3 divided by 2. D1 we have found out as 25 into T1. So from here you will get answer for T1. Okay, so someone please give me the answer for T and T1. Sir, T is 14.28. T is 14.28. Okay. So let me approximate it to be as let us say 16 mm. Okay, so what is T1? 7.14. 7.14. Okay, 7.14. Okay, so let me tell you that don't take 16, go for 20. Because I have solved it with 20, so I cannot verify the answers. But in exam also, you can go up to 16, 18, 20, anything. So T1, let us say if T2, T I am taking as 20, I will take this as 10. So my final dimensions will be T is equal to 20, T1 is equal to 10. So on the screen you can see we have found out 4 parameters D, D1, T and T1. So in pin also we have considered shear, crushing due to single I, crushing due to double I. Now what remains for pin? Pin में कौन सा part बाकी रह गया? Yes, pin में हमारा part रह गया bending criteria बाकी रह गया.